Let's bring our attention within ourselves. Let's try to calm down our attention, our thoughts from the outside world. Slowly, we'll bring our attention to our heart. Who Adi Shakti, the giver of Yoga Daini. You have given us our self-realization. We thank you very much, Shrimataji. Mother, let our hearts be pure and clean so that we can be worthy to worship you in our heart. Shri Mataji, let us completely feel you in our hearts. Mother, please give us the pure attention so that we stay connected at your divine lotus feet. Shri Mataji, by your grace, we have all gathered here for a collective meditation. Please guide us, be with us, and give us the state of complete oneness with you, the state of complete yoga. Offering our pranams to Shri Mataji in our hearts, mentally, we'll raise our Kundalini and take Bandhan. நமது முழு கவனம் சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்துக்கொண்டு நாம் ஸ்ரீ மாதாஜியின் திருக்கமல பாதங்களை வணங்கலாம். நமது சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் ஸ்ரீ மாதாஜியை வணங்கலாம். With complete attention on Sahasra, we'll take the 3 Maha Mantras slowly in the musical form. Tvameva Sakshat Shri Mahalakshmi Mahasaraswati Mahakali Trigunatmika Kundalini Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Devyai
माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माता श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। நமது கவனம் எப்பொழுதுமே நமது சஹஸ்ரார சக்கரத்திலேயே நிலைக்கட்டும். நாம் ஸ்ரீ மாதாஜியின் அருள் நுண்ணதிர்வுகளாக நமது சஹஸ்ராரத்திலிருந்து நாம் உணரலாம். Let's always throughout the meditation have our attention only on our sahasra to feel the divine love, the divine vibrations from Shri Mataji. We'll have a prayer to Shri Ganesha. Shri Ganesha, I am worthy of your attention. Please make me innocent so that I am always in your attention. Shri Mataji, you who are Shri Ganesha, please give us the wisdom and discrimination. முழு கவனம் நமது மூலாதார சக்கரத்தில் இருக்கட்டும். ஸ்ரீ கணேசரை பிரார்த்தனை செய்வோம். ஸ்ரீ கணேசா, தங்களை பூஜிப்பதற்கு நாங்கள் தகுதியுள்ளவர்களாக மாற்றுங்கள். எங்களுக்கு தூய அறிவையும் தூய ஞானத்தையும் தந்தருளுங்கள். Shri Mataji, bless us to be like Shri Ganesha, to be completely surrendered and dedicated at your lotus feet. Shri Mataji, நாங்கள் எல்லோரும் ஸ்ரீ கணேசரை போல் என்றென்றும் தங்கள் திரு கமல பாதங்களில் சரணாகதியோடும் முழு அர்ப்பணிப்போடும் இருக்க எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள். We'll take the mantra to Shri Ganesha. Om Tvameva Sakshat Shri Ganesha Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namo Namaha. Shri Mataji, let your Shri Ganesh Tattva remove all the obstacles to our spiritual ascent. Shri Mataji, please establish Shri Ganesha in all our chakras. Shri Mataji, தங்களுடைய ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தினால் எங்கள் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு இருக்கும் எல்லா தடங்கங்களையும் நீக்கிவிடுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, எங்கள் எல்லா சக்கரங்களில் ஸ்ரீ கணேசரை நிலைக்க செய்யுங்கள். அன்னை Let's do a little balancing of our nadis. நமது நாடிகளை சமநிலைப்படுத்துவோம். இரண்டு கைகள் பூமியின் மீது. முழு கவனம் நமது உள்ளங்கையில் இருக்கட்டும். தாயே, தாங்களே ஸ்ரீ பூமி தாயாக எங்களுக்கு அருள் புரிய வேண்டும். எங்கள் வாழ்வாதாரத்திற்கு தாங்களே எல்லாம் அளிப்பவர். ஸ்ரீ மாதாஜி,
எங்களுடைய நாடிகள் மற்றும் சக்கரங்களை தூய்மைப்படுத்த எங்களுக்குள் இருக்கும் எல்லா உபாதைகள் எதிர்மறை சக்திகளை இந்த பூமி தாய் வழியாகவே நீக்கிவிடுங்கள் தாய். நாங்கள் எப்போதும் ஒரு தூய கருவியாக இருக்க எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள் தாயே. Shri Mataji, you are Saksha Shri Bhumi Mata, the sustenance of our life, the giver of everything from this Mother Earth for our everyday living. We thank you, Shri Mataji, for all the blessings from this Mother Earth. We pray and ask you, Shri Mataji, to please cleanse us, to purify us through this Mother Earth, so that we become your pure instruments. Shri Adi Bhumi Mata Sakshat. Om Tvameva Sakshat Shri Adi Bhumi Mata Sakshat Shri Adi Shakti Mata Ji Shri Nirmala Devyai Namo Namaha. Will clear our இடா நாடி. நமது இடது நாடியை தூய்மைப்படுத்துவதற்கு இடது கையை மடியின் மீது, வலது கை தொடர்ந்து பூமியின் மீது. ஸ்ரீ மாதாஜி, தயவு செய்து தாங்களே எங்கள் இடது நாடியில் ஸ்ரீ மகாகாளி மற்றும் ஸ்ரீ பைரவின் முழு அருள் கிடைக்க எங்களுக்கு அருள் புரிய வேண்டும். எங்களுக்குள் இருக்கும் தேவையற்ற கடந்த கால சிந்தனைகள், எல்லா எதிர்மறை சக்திகள் மற்றும் குற்ற உணர்வு, மமகாரம், நமக்கு நாமே போடும் கட்டுப்பாடுகள் எல்லாவற்றையும் முழுவதுமாக பூமி மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, please purify our idanadi, remove all the badas, negativities, all unwanted past thoughts. Let everything get absorbed into this Mother Earth. Oh Mother, you are Sakshat Shri Mahakali and Shri Bhairavanath. நமது இடது கையில் நுண்ணதிர்வுகளை நாம் உணர வேண்டும். வலது நாடியை தூய்மைப்படுத்துவதற்கு வலது கையை மடியின் மீதும் இடது கையை ஆகாயத்தை நோக்கி வைத்துக் கொள்ளலாம். We have attention on our right channel, the Pingala Nadi. O Adi Shakti Ma, you are Saksha Shri Maha Saraswati and Shri Hanumana. Please cleanse and purify all our chakras on the Pingala Nadi. Take us away from all our thoughts of the future, unwanted thoughts of the future. Please remove all the excessive heat. Take away all the ego, all ill feelings. Let everything get dissolved into this ether. தாயின், எங்கள் வலது நாடியை பாதிக்கும் தேவையற்ற எதிர்கால சிந்தனைகள், அதிகமான உஷ்ணம் மற்றும் எங்களுக்குள் இருக்கும் அகங்காரம் முழுவதுமாக நீக்கி ஆகாய மார்க்கமாக நீக்கிவிடுங்க. தாங்களே ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதியும் ஸ்ரீ ஹனுமாராக எங்கள் வலது நாடியிலிருந்து அருள் புரிய வேண்டும் அன்னையே.
இரண்டு கைகள் அன்னையை நோக்கி நமது மடியின் மீது வைத்துக் கொள்ளலாம். Attention on our Sushumna Nadi. Both hands towards Shri Mataji. கவனம் முழுவதும் நமது சுழுமுனை நாடியில் இருக்கட்டும். ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே ஸ்ரீ மகாலட்சுமி மற்றும் ஸ்ரீ கணேசராக எங்கள் சுழுமுனை நாடியிலிருந்து அருள் புரிய வேண்டும். எங்கள் சுழுமுனை நாடியில் பாதிக்கும் எல்லா எதிர்மறை சக்திகளை முழுவதுமாக நீக்கிவிடுங்கள். நாங்கள் எல்லோரும் சமநிலையிலிருந்து இந்த தியானம் புரிய எங்களுக்கு அருள் புரிய வேண்டும். அன்னையே மதர், please bless us with complete balanced state. Please cleanse all our chakras on our Sushumna Nadi. Let your power of Sri Mahalakshmi and Sri Ganesha be completely established on our Sushumna Nadi. We'll have attention on the Mooladhar. நமது கவனம் மூலாதாரத்தின் மீது வைத்துக் கொள்ளலாம். ஆதி சக்தி மா, you are the mother kundalini within us. Please awaken, please arise. Please cleanse and purify all our chakras and nourish all our chakras so that we can become pure. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே ஸ்ரீ ஆதிசக்தி தாயாக எங்களுக்குள் இருக்கும் குண்டலினி தாயாக எழுந்தருளி எங்கள் சக்கரங்கள் எல்லாமே தூய்மை பெற்று நாங்கள் எப்பொழுதுமே தங்களுடைய திரு கமல பாதங்களில் சரணாகதியோடு இருக்க அருள் புரியுங்கள் தாயே. We'll take the mantra Shri Kundalini Gauri Mata Sakshat. Om Tvameva Sakshat Shri Kundalini Gauri Mata Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devyai Namo Namaha. With complete attention on the Mooladhara Chakra. நமது முழு கவனம் இப்போது மூலாதார சக்கரத்தின் மீது வைத்துக் கொள்ளலாம். ஸ்ரீ கணேஷ அதர்வஸ்ரீஷத்தை நாம் இப்போது கூறுவோம். We'll recite Shri Ganesha Adharvasrish. Om Namaste Ganapataye Tvameva Pratyaksham Tattvamasi Tvameva Kevalam Kartasi Tvameva Kevalam Dartasi Tvameva Kevalam Hartasi Tvameva Sarvam Kalvidam Brahmasi Tvam Sakshat Atmasi Nityam Ridam Vashmi Satyam Vashmi Avar Tvamam Avar Vaktaram Avar Shrotaram Avar Dhataram Avar Dhataram Avanuchanam Avasishyam Avar Vashatat Avar Purastat Avottarata Avar Dakshinata Avar Chodvata Avadharata Sarvato Mam Pahi Pahi Samanta Tvang Vangmayastvam Chinmayah
आनन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगतिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगतिदं त्वत्तिष्ठति सर्वं जगतिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगतिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो निलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मः त्वं योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मास्त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरो अनादि पूर्वमुच्चार्य वर्णादीं तदनन्तरम् अनुस्वार परदरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुदम् एतत्त्वमनुस्वरूपं गकार पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वार शान्त्यरूपं बिन्दुरुद्ररूपम् नादसन्धानं सन्निधा सन्धिः सैषा गणेशविद्या कनकऋषिः निश्चित गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो तन्वी प्रचोदयात् एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशम् अङ्कुशधारिणं रथं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुभूषितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं च सृष्टयादौ प्रकृते पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. Continue having attention on the Mooladhara chakra. Shri Mataji, let your power of Shri Kartikeya remove all the Rakshasa gunas within us, all the 6 enemies of Kama, Krodha, Mada, Moha, Lobha, Matsarya. Let everything be completely removed so that we can be pure. Shri Mataji, தாங்களே ஸ்ரீ கார்த்திகேயாவாக
எங்கள் வலது மூலாதார சக்கரத்திலிருந்து அருள் புரிய வேண்டும். எங்களுக்குள் இருக்கும் எல்லா ராட்சச குணங்களும், எங்களுக்குள் இருக்கும் எல்லா தீய குணங்கள், கோபம், வெறுப்பு, விருப்பு, பொறாமை, பேராசை எல்லாவற்றையும் முழுவதுமாக நீக்கிவிடுங்கள் தாயே. Slowly we'll bring attention Swadhisthana Chakra. Shri Mataji, you are the giver of the pure knowledge within us. Bless us with the Nirmal Vidya. Bless us with pure attention. Shri Mataji, தாங்களே எங்களுக்கு தூய அறிவை தருபவர். தயவு செய்து ஸ்ரீ நிர்மல் வித்யா மற்றும் நிர்மல் சித்தாவை தந்தருளுங்கள் தாயே. எங்கள் கவனம் எங்கும் சிதறாமல் நிலைக்க செய்யுங்கள் அன்னையே. அட்டென்ஷன் நாபி சக்கரா. கவனம் நாபி சக்கரத்தில் வைத்துக் கொள்ளலாம். அன்னை தாங்களே ஸ்ரீ லக்ஷ்மி விஷ்ணுவாக எங்களுக்கு அருள் புரிய வேண்டும். தாங்களே எங்கள் நலன்களை காப்பவர். எங்களுக்குள் இருக்கும் குடும்ப பிரச்சனைகள், பண பிரச்சனைகள் எதுவாக இருந்தாலும் அதை முற்றிலுமாக நீக்கிவிட்டு நாங்கள் அமைதியுடனும் திருப்தியோடு இருக்கவும் எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள் அன்னையே. ஸ்ரீ மாதாஜி, யுவா ஸ்ரீ சாக்ஷா ஸ்ரீ லக்ஷ்மி விஷ்ணு. You solve all our family and money matters, and you take care of our well-being. Mother, please bless us with complete peace and complete satisfaction in our Nabi Chakra. Shri Mataji, you are the blesser of complete attention. Attention completely on the Bhavasagar. நமது முழு கவனம் பவசாகரத்தின் மீது வைத்துக் கொள்ளலாம். Shri Mataji, please remove all the false guru attacks, all the false guru knowledge. Bless us with the principles of all the 10 gurus within us. Shri Mataji, போலியான குருமார்களின் போதனைகள், அவர்களுடைய ஆதிக்கம் முழுவதுமாக நீக்கிவிட்டு 10 குருமார்களினுடைய குணங்கள், அவர்களுடைய போதனை எங்களுக்கு நிலைக்க செய்யுங்கள் அன்னை. ஸ்ரீ மாதாஜி, தாங்களே ஸ்ரீ ஆதிகுரு தத்தாத்ரேயாக எங்கள் பவசாகரத்திலிருந்து எங்களுக்கு அருள் புரிய வேண்டும். We'll take the mantra, Shri Adi Guru Dattatreya. Om Tvameva Sakshat Shri Adi Guru Dattatreya Sakshat Shri Adi
Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Mother, by your grace, I am my own Guru. தாயே தங்கள் அருளால் நானே எனது குரு. Shri Mataji, you are my Guru and I am my own Guru. We have no one else. It is you only, Mother, who can guide us, who can lead us and give us the emancipation. Shri Mataji, தாங்களே எங்களுக்கு குருவாக இருந்து நாங்களே எங்களுக்கு குருவாக இருக்க அருள் புரிய வேண்டும். Attention on the heart, Anahata. Please give us purity in our heart. எங்கள் இதயம் தூய்மையோடு இருக்க எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள். Please let us feel your divine love in our heart. Let us also feel complete love for everyone. Shri Mataji, தங்களுடைய தெய்வீக அன்பினை எங்கள் இதயத்தில் உணர செய்யுங்கள் தாயே. Let our hearts open out, Mother, to receive your blessings. Shri Nirmal Manas Sakshat Om Tvameva Sakshat Shri Nirmal Manas Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Attention on the Vishuddhi Chakra. Shri Mataji, please give us the state of being complete oneness. Make us part and parcel of the Virat. Give us the feeling of complete collective oneness. Shri Mataji, தயவு செய்து நாங்கள் எல்லோரும் ஒன்றாக கூட்டாக இருக்க எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள் தாயே. எங்களுக்குள் எந்த பாகுபாடு வேறுபாடு இல்லாமல் நாங்கள் எல்லோரும் தங்களுடைய குழந்தைகள். எங்களுக்கு அந்த கூட்டு மனப்பான்மை தந்தருங்கள். எங்கள் மாயையிலிருந்து அகற்றி நாங்கள் பேசும் ஒவ்வொரு சொல்லும் இன்சொல்லாக இருக்கட்டும் அன்னையே. அதை மற்றவர்களை புண்படுத்தாமல், நாம் செய்யும் செயல்களும் மற்றவர்களை புண்படுத்தாமல் இருக்க எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள். ஸ்ரீ மாதாஜி, நாம் செய்யும் தவறுகளை அதை உணர்ந்து நாங்கள் அதை திருத்திக் கொள்ளும் சக்தியையும் எங்களுக்கு தந்தருளுங்கள். Holy Mother, please bless us with the collectiveness, the oneness in collective. Please take us away from the Maya of this materialistic world. Give us the countenance of sweet words so that we do not hurt others
with the way we speak, with the way we do. Shri Mataji, please help us to correct ourselves for any wrong that we do. Give us the quality, Mother, to introspect, to correct whatever wrong that goes within us. We'll take the mantra, Shri Nirmal Jana. Om Tvameva Sakshat Shri Nirmal Jana Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Let's slowly raise our attention to our Agnya Chakra. மெதுவாக நமது கவனத்தை ஆக்ஞா சக்கரத்திற்கு கொண்டு வரலாம். தாய், எங்களுக்குள் இருக்கும் எல்லா அகங்காரத்தையும் மமகாரத்தையும் நீக்கிவிடுங்கள். நாங்கள் பணிவோடு இருக்க எங்களுக்கு அருள் புரியுங்கள். தாயே, எங்களுக்கு மன்னிக்கும் குணத்தையும் தந்தருளுங்கள். Shri Mataji, please remove all the ego, super ego. I forgive everyone. We can say loudly together. I forgive everyone. I forgive everyone. I forgive everyone. Whatever wrong, whatever ill feelings, whatever indifferences we have with others, Shri Mataji, from our hearts we seek and pray for forgiveness. Mother, I forgive myself. We can all say together, I forgive myself. I forgive myself. I forgive myself. We'll take the mantra, Shri Nirmal Tapa. Om Tvami Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi. வைத்துக் கொள்ளலாம். Shri Mataji, please bless us with the state of yoga. Shri Mataji, தயவு செய்து எங்களுக்கு யோக நிலையை தாருங்கள். With complete attention on Sahasra, we'll recite 3 times Om slowly. Shri Mataji, you are the doer, you are the giver, you are the enjoyer.
Please give us the state of complete joy, the state of Niranand. ஸ்ரீமாதாஜி, தாங்களே எல்லாம் செய்பவர், தாங்களே அதை அனுபவிப்பவர். எங்களுக்கு ஆனந்தத்தை தந்தருளுங்கள், நிரானந்தத்தை தந்தருளுங்கள். We'll take the mantra. Shri Satchit Ananda Rupam Om Tvameva Sakshat Shri Satchit Ananda Rupam Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Let's try to be in meditation for some time. शिवोऽहं शिवोऽहं मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं मनोबुद्ध्यहङ्कारचित्तानि नाहं न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च श्रोत्रजिह्वे न च घ्राणनेत्रे न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु न च व्योमभूमिर्न तेजो न वायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न च प्राणसंयो न वै पञ्चवायु न च प्राणसंयो न वै पञ्चवायु न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोश न वा सप्तधातुर्न वा पञ्चकोश न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु न वा पाणिपादं न चोपस्थपायु चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो न मे द्वेषरागो न मे लोभमोहो
पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यज्ञा अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता अहं भोजनं नैव भोज्यं न भोक्ता चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् न मे मृत्यु न शङ्का न मे जातिभेद न मे मृत्यु न शङ्का न मे जातिभेद पिता नैव मे नैव माता न जन्म पिता नैव मे नैव माता न जन्म न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य न बन्धुर्न मित्रं गुरुर्नैव शिष्य चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 शिवोऽहम् अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो अहं निर्विकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां विभुत्वाच्च सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणां तदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः तदा मे समत्वं न मुक्तिर्न बन्धः चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूप शिवोऽहं 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 We'll continue to have attention on Sahasra. We'll recite Sri Nirmal Satya and meditate for some time. நமது கவனம் சஹஸ்ரார சக்கரத்தில் வைத்துக்கொண்டு சிறு தியானம் பண்ணலாம். நிர்மல் சத்யா மந்திரத்தை கூறுவோம். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ நிர்மல் சத்யா சாக்ஷாத் श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः. நாம் தொடர்ந்து இதே தியான நிலையில் ஸ்ரீ மாதாஜியின் அருளுரையை கேட்போம். We listen to Sri Mataji's speech by being in complete attention. The worshipping of your Guru.
not of your mother, but of your Guru. The Guru establishes the dharma, the sustenance in the disciples. He gives all clear-cut ideas about what is the sustenance power for the disciples. He may preach for the whole world, but for his disciples, he gives very clear-cut instructions. Most of the gurus, when they do it, they actually chisel out every disciple. First they weigh what is the urge of a disciple. How much a disciple really can receive. And then they accept somebody as a disciple after verifying if the disciple is really capable of receiving even the instructions about dharma. But not in Sahajya, because your Guru is a mother. So she initiates you without finding out what is your urge, what is your capability, and what quality of a personality you have. It's a very different style of Guru that you have, which looks after your body, looks after your mind, and looks after your problems, and then bestows upon you the blessing of Kundalini awakening. But normally the Gurus do not do. The reason is they are only Gurus, not mothers. When you do the Guru Puja, what do you do really? You must understand that. That means you worship the principle of Guru in you by worshipping me. The principle is within you, which is to be awakened, which is to be blossomed, by which you become the Gurus. And the principle is that of Dharma. So, one has to know that when you are doing my puja, I would like this time really to give you that blossoming within your being, which makes you fragrant with Dharma. But as you have seen, after realization you have to be very careful. In the same way, after becoming Guru, it is even more necessary to be careful. Because as you know, that in the West, we have ego problems. The Westerners are ego-oriented. And this principle, once established, Guru means higher. Guru means the one who has more weight. Guru word is used even for magnetism. It has more weight, gravity. Such a person has much more gravity than others have. So he can teach others. He has to be a higher person. When this awakens into you, has to be sustained within you, that you do not succumb to the ways of ego. Also, you should not have irreligious behavior, nor you should have indecent behavior. Neither you should be hot-tempered, nor should be servile, but should be in the center. You are the Guru. You are the higher personality than the rest of them.
So you have to maintain a certain higher value of dignity, of your own sustainer, which has to be higher than those whom you teach to become your disciples. If you are defective, it would be a very big loss for the Sahajya. Like you become the activated organs of the body. Supposing one cell dies, makes no difference to the body. Even many die, makes no difference. But if the organs fail in its functioning, then all that depends on that organ fails completely. Maybe it will be fatal. Now, with ego, super-ego also becomes very active. And many people feel that then how can we bear this load so much? And the another escape starts. As soon as I say that there should be no ego expression, people do not like it and they want to escape it by saying, oh, we can't do it, too much for us. How can we come up to that point? This is a typical example of too much ego, super-ego. But it is not at all difficult. Not at all difficult. First of all, you must have faith in yourself and faith in Sahajya. I will definitely today awaken that in you, no doubt, I will. But keep it enlightened. By understanding that you are a guru, you will understand your responsibility. We change our positions very easily in general life. If you are made a jailer, immediately you assume as a king. In the same way, when you are the guru, not by bestowing upon you any names or anything, I call you a guru, but because it has happened in your Navi Chakra and in the void that you become the guru. It's a happening in your awareness that blossoms you into that position of a guru. It is not artificial. It is no brain washing or anything. It happens in you. But to retain it, one has to. But the biggest thing on the ego is playing games. That is the biggest thing. Some people try to show they're very innocent. Some people try to show they're very clever. Playing games is the worst thing of ego. And that's why you must know as a guru, you are not to play games. You have to be absolutely straightforward. Absolutely straightforward. Everyone can make you out what you are. As soon as you are a guru, you have to be absolutely a transparent one. Face it. You may make mistakes, makes no difference at all. Doesn't make any difference at all if you make some mistake. But do not pretend something which you are not. Trying to put up some sort of a face. And all these things are not going to happen. Sahajya is a genuine thing, is a true thing, and we have to be true. It doesn't happen by just giving somebody a name, now come along, you become an initiator and all that. It is not that way. You have to raise the Kundalini, give them a realization, and tell them that unless and until it is realized, it won't work. You could be better gurus than me, I can assure, for two reasons. Firstly, I am a mother. So the love principle is much more, always it supersedes the guru principle. You have to love others, no doubt. But in surrendering, you can help me much more than I can. For example, I'll give you the example of Bala. He has a center in Birmingham. And he had some people and he sent Philip to me yesterday. He came down, I saw him. Of course, he had lots of problems
tremendous problems on his Kundalini. But his surrendering capacity was so great that he just started sucking my vibration, it just started flowing into him. And it was only because he came through Bala. Because Bala must have told him that the only way to do it is to surrender. And that has gone into his being so clearly that he is done. He has seen to all arguments and everything, and he has finished them off. And when he came to me, he just started getting everything into it. And he was so much changed by the image. I was amazed that the whole saintliness was coming on. I was amazed at it. But you yourself have to be very careful. You have to be loving, no doubt. But loving doesn't mean that you show fear about things and go out of the way to please people. No, it never means that. Neither it means shouting at people or getting angry with people, but it never means, for a Guru Tattva, never means that you go on asking for votes. Have a little indifference about it. If the disciple accepts, well and good. But you are not going to throw pearls for these animals to trample. So that dignity, the protocol of your own personality you must maintain. That is very important because such people are extremely different. And nobody will accept Guru who is like this. Trying to show that you are afraid of them. If you are afraid, how could you be the Guru? Or trying to show you are very innocent, and very sweet, overnight, and looking after food and this, that. No. They should look after you, not that you should look after them. When you are the Guru, they have to look after you. Of course, you have to be kind, and you have to be nice to them, as your mother has been. But you just don't run after them. That would reduce your quality as a Guru. Stand in your own dignity and understand. I know some of them will despise you. Makes no difference. Somebody will laugh at you, makes no difference. Stand in your dignity. Like a big elephant walking and the dogs are barking. Dignity is the first thing the Gurutva is called with. There's no word exactly which can match with you in English. But I would call you for say that the dignity and the gravity of personality. Gravity, the weight of the personality. See, the personality should be such that it's not frivolous. People know you cannot take liberty. It is not frivolous. It is choice, but not frivolous. People who talk frivolously can never be good beings. Any kind of frivolity is not good. This is the first thing you have to know. It's the gravity you must have. And second thing is, dealing with your disciples, never despise them. Despising is against Sahajya. It's a sin. Even if somebody is suffering from, say, very bad spirit, you should not despise. You can condemn, but not despise. You must understand the difference between them. That you can condemn that this Guru is bad, he's a Rakshasa, he's satanic, but you cannot despise. Despising is a very sly method. It is not meant for any Sahajya. It's most indignified. But you can clearly condemn a person is all right. You have to be clear about this point. You never despise your disciples. Love them. Give them respect. And respect them. For maybe tomorrow they may be greater gurus than you are. I respect. And you have to respect them. And never be in competition with your disciples. Be happy when you find your disciples come up higher and higher. That is the greatest fulfillment of a guru, is to see that your disciples are rising like this. You see, they are your flowers. You are the tree. You're watching the flower side. Should be like that.
While talking, you should not be very silent nor over talking. You see, any extreme should be given up. When you have to talk, you must talk. Talk with dignity and gravity. And in experience, with understanding. Now, supposing you have some problem, sit down in your meditation and find out. You will find out within yourself the answer. If not, you can always ask. And you'll be amazed how the powers will be flowing through you. Today, in this puja, please be in a receptive mood and it will work out. If there are some problems, some chakras touching, just don't worry about them. Pay attention to how much you are receiving in. That's all. Some people have very funny ideas. Even during puja, they go on like this. It's very bad. Even when I am speaking, they do it like this. It's all frivolous. It's a kind of a gravity a person must have. That when you are listening, you must listen with full gravity. And that is the gravity of this Mother Earth is nothing but is her awareness, is her vibration solidified. That is her gravity. In the same way, this gravity must come into us. When it comes into you, a person becomes like a magnet. Absolutely like a magnetic personality. Magnet, as it attracts people, or we can say as it attracts the eye. It doesn't attract every sort of thing. In the same way, you will be attracting the real seekers. The real seekers will come to you when they will see that magnet working. In India, many people have put signboards in their houses. Signboards like Sahajya Center. And you are to be surprised that in every corner one can do like that work and people can join and come there and a center can be done. Next time, of course, I will also tell you how you should, before doing anything, before starting your guru work, you must always prostrate yourself before your own guru and then do it. Because in India, even a musician, also when he starts singing, first he takes his singing, then the of his family, Narana, they call it. Which here the family is Sahajya. He should take the name of Sahajya. And while singing the songs, sometimes the gurus have composed the poems and things, and there is the name of the guru somewhere in between that. Kabir says or somebody says. When the name comes in, they hold their ears like this. Even while dancing, they hold their ears like this. If you notice it carefully, they hold their ears. Meaning that, oh, Guru, please forgive us, we are taking your name. Like this, so please forgive us, oh Guru. That kind of a complete respect for the Guru has to be. If you do not give respect, you will not focus. Respect is to be given, then it is to be commanded. First, you start demanding respect, first you have to give respect. And that is something you should remember, that people will respect you. Lastly, that we have to be very careful about how we behave with others and how we dress up also. It's better that you take lighter shades of clothes and more whiter shades of clothes, because that is how it is going to work out ultimately. Try to take, when you are doing Guru's job, then take to lighter colors and lighter shades, maybe white is the best. I mean, now henceforward when you buy something, buy of genuine stuff like cotton and all that, and buy one thing like that, you can have finished genuine things for when you are doing Guru's work, when you are meeting your disciples, meet them in that dress. Because white color is meant for deceptive work, and that's what we have to wear. Only when you are dealing like a Guru, that is important. That will help you, because you must have the personality of a Guru. When people see you, they should know that you are a Guru. When you walk, they should think you are a Guru. When you talk, they should say that he is the man. We can say he is definitely the man who has achieved something. So in every way, you'll be blessed
by the divine, because you are doing the job of the divine. The divine is going to look after you. Everything. Only thing what you have to look after is your own dignity and your own proper counting. That's why when I tell the hippies that you cut your hair and it is too much of it not good, it should look like something out of the blue. Even too much dandy person doesn't look nice as a good. It's a small extreme must be avoided. It should be in the center. Something very, very good. In the center, you must just have nothing this extreme or that extreme. As for the knowledge that is within you. Actually, I don't have to tell you anything. That is within you. You will just speak inside and it will be there. You just start speaking and it will be expressing itself. You won't have to at all ask me. I can tell you this much. It will just come out. There's a girl of Kenya in India and she started this, and when she was speaking, people said, at least Mataji herself was speaking. So don't have to worry about it. But in case there is any problem, I'm always there to help. So may God bless you. Let us be prepared for this puja. By God's grace, all of you will have. In this awakening, I have to tell you that age, race, sex, color, nothing matters. Hey Adima, page number 79. Hey Adima, hey Andima, hey Adima, hey Andima, Devanchile, Tetu dile, Devanchile, Tetu dile, Kalpadruma, hey Adima, hey Andima, hey Adima, hey Andima, Dhamadiche Akash tu Shishirat ya Madhumas tu Yamadiche Akash tu Shishirat ya Madhumas tu Deshimrta tu Amrta Deshimrta tu Amrta Purushottama he Adima he Andima he Adima he Andima Devi tujhe Idukeshri Jhalorini
Hey Nirmalama, page number 79. तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर्ग की देवी, संगीत तुझसे, हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम पार सहज में तेरी कृपा से, हम पार सहज में तेरी कृपा से, निर्मल विद्या का वरदान दे माँ। हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। देवों ने समझी है, मुनियों ने जानी, चैतन्य की भाषा पुराणों की वाणी। देवों ने समझी है, मुनियों ने जानी, चैतन्य की भाषा पुराणों की वाणी। साधक ये समझे, मानव ये जाने, साधक ये समझे, मानव ये जाने। ये अनमोल घड़ियां, ये अवतार तेरा, हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। तू आदि शक्ति सहस्रार विराजे, चैतन्य लुटाए सतयुग जगाए। तू आदि शक्ति सहस्रार विराजे, चैतन्य लुटाए सतयुग जगाए। विश्व की जननी तू महादेवी, विश्व की जननी तू महादेवी, तेरा पुत्र बनने की पात्रता दे माँ। हे निर्मल माँ, हे निर्मल माँ, तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। तेरा प्यार मोक्ष का आनंद है माँ। Let's be in meditation when Aarti is being performed.
सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जग में संकट कारण कितने लिए अवतार माँ, कितने लिए अवतार। विश्व में तेरी महिमा, विश्व में तेरी महिमा। तू गंगा यमुना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जो भी शरण में आया सुख ही मिला उसको माँ, सुख ही मिला उसको। बैठ के दिल में ओ माँ, बैठ के दिल में ओ माँ, लौट के ना जाना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। मानव में अवतर के कर दिया उजियारा माँ, कर दिया उजियारा। कल युग में माया है, कल युग में माया है, फिर भी पहचाना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। संत जनों की धरती है भारत माता माँ, है भारत माता। इस धरती पर आकर, इस धरती पर आकर, दुख से दूर करना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। जब दिल में आए तब मधुर संगीत सुन लो माँ, मधुर संगीत सुन लो। होए सके जो सेवा, होए सके जो सेवा, हमसे करा लेना माँ, सबको दुआ देना। सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना। जय निर्मल माता जी, जय निर्मल माता जी, दिल में सदा रहना माँ, सबको दुआ देना। माँ, सबको दुआ देना माँ, सबको दुआ देना।
Slowly, one by one, we can offer flowers. Become as soldiers to fight with. It's possible with the power of love, with the power of love, with the power of love.
जय श्री माता दी। श्री जगदम्बे आई रे मेरी निर्मल माँ, हे श्री जगदम्बे आई रे मेरी निर्मल माँ। मेरे जागूते बाग सिर पे चरण कमल की छाप, सारे जग में परी बधाई रे मेरी निर्मल माँ। हे श्री जगदम्बे आई रे मेरी निर्मल माँ, हे श्री जगदम्बे आई रे मेरी निर्मल माँ। माँ की शक्ति है बलशाली, माँ की शक्ति है बलशाली। निर्मल देवी शेरा वाली, निर्मल देवी शेरा वाली। इस दर पे न रहे कोई काली, इस दर पे न रहे कोई काली। जग कुल शन की है रखवाली, जग कुल शन की है रखवाली। जननी है जन्मदायिनी, शुद्ध योग धर्मदायिनी। खुशी समाई रे मेरी निर्मल माँ, हे श्री जगदम्बे आई रे मेरी निर्मल माँ, हे श्री जगदम्बे आई रे मेरी निर्मल माँ। मानव रचना में न कांच पड़ा है, मानव रचना में न कांच पड़ा है। रत्नों का भंडार भरा है, रत्नों का भंडार भरा है। मानव में अहंकार भरा है, मानव में अहंकार भरा है। अपनी शक्ति से दूर कड़ा है, अपनी शक्ति से दूर कड़ा है। पीड़ित नरक में बाए पार करे निर्मल माई, देवी परमा को आई रे मेरी निर्मल माँ। हे श्री जगदम्बे आई रे मेरी निर्मल माँ, हे श्री जगदम्बे आई रे मेरी निर्मल माँ। भाग्य उदय हुआ भाई तेरा, भाग्य उदय हुआ भाई तेरा। जगदम्बे का लग गया फेरा, जगदम्बे का लग गया फेरा। चित्त चिंता का कटेगा घेरा, चित्त चिंता का कटेगा घेरा। स्वर्ग बनेगा जीवन तेरा, स्वर्ग बनेगा जीवन तेरा। सच्चे दिल से ध्यान कर ले, माता जी का मान कर ले। रूहानी आवाज आई रे मेरी निर्मल माँ, हे श्री जगदम्बे आई रे मेरी निर्मल माँ, हे श्री जगदम्बे आई रे मेरी निर्मल माँ। जब जब हानि होए धर्म की, जब जब हानि होए धर्म की। नर बोले शक्तियां तर मन की, नर बोले शक्तियां तर मन की। तब शक्ति जागृत हो ब्रह्म की, तब शक्ति जागृत हो ब्रह्म की। करे स्थापित मूर्ति सत्य कर्म की, करे स्थापित मूर्ति सत्य कर्म की। कर्मदायिनी विश्व निर्मला, धर्मदायिनी मात कविता। अलोकित दूत चलाई रे मेरी निर्मल माँ,
हे श्री जगदम्बे आई रे मेरी निर्मल माँ। हे श्री जगदम्बे आई रे मेरी निर्मल माँ। मेरे जागूटे बाग सिर पे चरण कमल की छाव, सारे जग में परी बधाई रे मेरी निर्मल माँ। हे श्री जगदम्बे आई रे मेरी निर्मल माँ। हे श्री जगदम्बे आई रे मेरी निर्मल माँ, मेरी निर्मल माँ, मेरी निर्मल माँ। Jai Shri Mataji. Let us completely thank Shri Mataji for all her blessings and the complete pranam. We raise our kundalini and take bandhan. Jai Shri Mataji. With humble pranam to Shri Mataji, let us welcome our beloved Vice Chairman of National Trust and committee member and South India, Mrs. and our TN coordinator to this holy place. ஆயுஷத்தின் கருணையாலையும் அன்பாலையும் நமது அன்னையின் புனித பூமிக்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைவரையும் வருக என வரவேற்கிறோம். ஜெய் ஸ்ரீ ராம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவரின் சார்பாக புதுச்சேரிக்கு நேஷ்னல் ட்ரஸ்டிலிருந்து வரும் ஸ்ரீ ரமேஷ் மந்தனா அவர்களையும், நேஷ்னல் ட்ரஸ்டியாக நமது தமிழ்நாடு புதுச்சேரிக்கு ஸ்ரீ மிஸ்ஸஸ் விஜயலக்ஷ்மி அவர்களையும் வரவேற்கின்றோம்.